Hello everyone, this is Tejas Shekhar from Spider Software, and in today's webinar session, we'll be exploring what the concept of mean reversion is using the indicator which is known as the Bollinger Band. So if you are not previously familiar with this concept, I hope this will be a very insightful session which will help you to enhance your trading strategies. So I will turn off my webcam now and we'll proceed with the webinar. Okay, so as you can see, as I have mentioned once again, we'll be exploring the concept of mean reversion with the help of the indicators, which are the Bollinger Bands. Now I'll just switch to the next slide here. So in today's webinar session, we'll be covering the concepts of mean reversion, and then based on this concept, using the Bollinger Band indicator, how we can trade using this concept, we'll be looking into that as well. So I'll be explaining what the trade setup will be, and then we'll be looking at how these signals for taking the trades, how can we identify them. So I'll also be explaining how you can create a scanner to identify such signals, and then we'll be taking a few questions if you have any doubts. So before we begin with the webinar, I would like to just ask and start a short poll to see who here is already familiar with the concept of mean reversion. I would just like to see if our audience is familiar with it. So I've just launched a poll now, and I hope a lot of you will respond to this so I can get a good idea of whether the audience is familiar with this concept or not. So I would like to encourage everyone to please participate. Okay, so as I can see, a majority of you are not familiar with this concept here. So first, the first section of this webinar will be understanding what the concept of mean reversion is. So I'll just show you this image over here. So as you can see, there is a blue line in the middle over here. This blue line in the middle, you can consider it as the average price of an asset. So as you can see in this image, whenever the price tends to move around this average value, and that is known as the concept of mean reversion. So whenever the price moves away from a long-term average, it has a tendency to come back towards this average value, this mean value, and that is what is known as mean reversion. So now we'll just go back to the previous slide, which explains what this concept is. So mean reversion is a financial theory that suggests that the price of an asset will return to its long-term mean or long-term average. So this is a concept that is also involved in statistics. If you're familiar with the concept of normal distribution, we have seen that if we are considering a sample size, most of the parameters will be within around 95% of our parameters will be within a few standard deviations of our mean. So this is a tendency of statistics of the samples to tend towards the mean. It is a central tendency. So this is what the concept is. So here we have seen that the concept is grounded in the belief that asset prices and historical prices will gravitate towards a long-term average over time. And the further away it moves from this average, the higher the possibility that the price will come back towards the average. So जितना दूर जाएगा ये price हमारा average से, उतना ज़्यादा उसका probability बन जाता है कि it will return towards the mean. So that this theory is what is seen in this image over here. So we can see that this white line, it is moving away from the average and then it is coming back towards it. Once again, so we can see that it is moving around the average itself. And this is what we will try to take advantage of using our trade setups. So this concept of mean reversion, we can take advantage of it using multiple indicators. So a few of them over here that are commonly used to trade using the concept of mean reversion are moving averages. So whenever the price moves further away from the average, or if it comes towards the average, we'll be able to identify the movement of a stock, the probability of a stock's movement towards its average using this indicator. Then we have the Bollinger Bands. So if you are familiar with the Bollinger Band indicator, there are three bands that are present. There's a middle band and then there's an upper and a lower band. So the middle band is also a moving average in this case. And when the price moves towards the upper band or the lower band, you might have noticed that the price will touch the upper or lower bands and then it will come back towards the middle band. So over there as well, we'll be able to see the concept of mean reversion. Then we have next the RSI, the relative strength index. And in this particular indicator, we know that there are zones which are known as the overbought or oversold zones. So we have seen that whenever a stock enters into the overbought zone or an oversold zone, there is a potential, there is a probability that there will be a reversal from that point onwards. So we'll be, and then further, there's also the stochastic oscillator, which is used, and also the MACD, which is the moving average convergence divergence. So these are a few indicators that are used to trade using the concept of mean reversion.
Now, this next slide over here, I've added a chart for Nifty. So here I've added the Bollinger Band indicator and I've also added the smooth RSI. So we'll be using both of these indicators to identify our trade signal. So we'll be discussing our trade setup now. So as you can see in this image as well, I have indicated the points from where the mean reversion has occurred, where I have marked the red arrow. That is a potential. It has the price has touched the upper band, and from the upper band, it is returning to the middle band over there. And then similarly, I've added a green arrow. So from that green arrow, the price has touched the lower band, and from there, it is staging a reversal towards the middle band. So in this way, we'll be taking trades using this particular logic of mean reversion here. So we have seen our trade setup. We have seen what it looks like visually. Now we'll also understand what exactly our signals will be. So before that, I would like to just start another poll to determine which type of market scenario would be the best for applying this particular mean reversion strategy. So I would like to request everyone to kindly participate in this poll so that I get an idea of what your thoughts are on how this strategy can be applicable in which market scenario. Okay, so we've concluded the poll now, and as I'm looking at the results here, I can see that around 50% of you have answered that the range-bound market scenario would be the best for this particular strategy, followed by 38% of votes for trending and very few, around 10% of votes for the consolidating market scenario. So, as the majority have voted the range-bound market, yes, you are correct. The range-bound market scenario is where the strategy will be the most effective, as the price over here, you can see in this case as well, Nifty over here has just been range bound. So from this arrow over here, these two sections, you can see that the price is tending to move around the average. So a scenario where the stock price is just moving up and down over the average. So we'll be able to deploy the strategy in those scenarios and identify trading signals there as well. So now we understand what exactly this setup is. So here in the Bollinger Band, the parameter that I've used is the 20 moving average for the middle band, and I've used the standard deviation of 2 for the upper and the lower bands here. So we'll be using the Bollinger Band. So the Bollinger Bands, the upper and lower bands, do tend to act as a support and resistance zones. So we have seen that the stock price will tend to bounce from these zones quite often. Sometimes, yes, when the price touches the upper bound, and over there, if there is sufficient momentum, if the volume is rising, and there is positive momentum in the stock, yes, it will continue to rise. In that case, it might not bounce back. So, but in the majority of cases, when the stock is moving range bound, that is why we are using this particular scenario. We're using a range bound scenario so that we know that when the price touches the upper band or the lower band, there is a higher probability of it taking a reversal from there. So in the next point, we've just discussed this as well. When the price of a script crosses the upper or the lower band, it indicates an overbought or oversold sentiment respectively. So as we have discussed in the RSI as well, there is an overbought zone and there is an oversold zone. And we have noticed that when the stock price enters into that zone, afterwards, while it is from that point onwards, we have seen that the momentum tends to slow down and we have seen reversals starting from those zones here. And we will be applying the same concept to the Bollinger Bands as well. So the next point it is mentioned as well, after crossing the upper or the lower band, the price is expected to revert back to the mean, that is the middle band. So it is expected to move back towards our moving average, which is the 20 period moving average, the 20 period SMA. So in this case, we'll be able to identify both long as well as short trade opportunities. So when the price is touching the lower band and it is staging a reversal from there, वहां पर हम एक पॉजिटिव मूवमेंट देख सकते हैं, तो वहां पर हमारी लॉन्ग एंट्री बनेगी. एंड सिमिलरली जब जो अपर बैंड को टच करता है स्टॉक, अपर बैंड को टच करके जहां से घूमता है, वहां पर हमारी शॉर्ट एंट्री बनेगी. बट ये सिर्फ हम बॉलिंजर बैंड्स पे रिलाई नहीं करेंगे, हम एक एडिशनल इंडिकेटर को भी यूज करेंगे इसके साथ, because as we all know, single indicator पे rely करना, it will make our trades not as effective. So we will be combining a second indicator. ये यहाँ पर end में भी मैंने mention किया है, the final point here is that the strategy is the most effective in the range bound market scenario. Because जब trending market होता है, I will go back into the software over here and I'll show you a few examples. तो जैसे यहाँ पर ये मेरा निफ्टी का चार्ट आ गया. I'll just disable this line tool over here. इसे मैं हटा देता हूँ.
So here we can see that when Nifty was rallying over here in the past year, जब वो all time high के पास जा रहा था, you can see that the price has tended to stick to this upper band for a very long period of time. तो यहाँ पर जब हम trending market में घुस जाते हैं, तो यहाँ पर हमारी exit में we can face issues over here while trying to, if we are expecting कि trending market में भी ये पूरा इतना नीचे आ जाए, तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन गलत हो जाएगा. एंड जस्ट बिफोर दिस वी कैन सी दैट व्हेन निफ्टी वाज ट्रेडिंग साइडवेज, यहाँ पर ब्यूटीफुल एग्जांपल है हमारे पास मेन रिवर्जन का. यू कैन सी दैट हाउ परफेक्टली इट हैज ट्रेडेड बिटवीन दीज बैंड्स ओवर. यहाँ पर हमें 2 बार कंसेक्यूटिवली प्रॉपर मीन रिवर्जन के यहाँ पर एग्जांपल्स मिले हैं. सो एज यू कैन सी रेंज बाउंड मार्केट विल बी द मोस्ट इफेक्टिव. यहाँ पर ट्रेंडिंग मार्केट में आप ट्रेड लेने जाओगे तो आपको यहाँ पर तकलीफ हो जाएगी इफ यू ट्राई टू एम्प्लॉय दिस स्ट्रैटेजी. तो ये स्ट्रैटेजी पर्टिकुलरली रेंज बाउंड मार्केट के लिए ही इफेक्टिव है. तो अब हम यहाँ पर वापस जो है विल गो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन एंड अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे हमारे सिग्नल्स कैसे बनेंगे. तो पहला होगा हमारा शॉर्ट ट्रेड. हम कैसे डिसाइड करेंगे कब लेना है. तो ये तो हमने डिसाइड कर लिया जब अपर बैंड को टच कर रहा है तो तब हमारा जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव बन जाएगा. वहां पर हमारा रिवर्सल का एक सेंटिमेंट बन जाएगा. तो इन दिस केस जब प्राइस अपर बैंड को ऊपर क्रॉस करता है एंड उसके बाद वापस जब अपर बैंड के नीचे आ जाएगा, उसी के साथ यहाँ पर हम जो स्मूथ RSI इंडिकेटर है उसका इस्तेमाल करेंगे. उसमें जब नेगेटिव क्रॉसओवर आएगी तब हम फाइनली जो है हमारा एंट्री लेंगे. बिकॉज इफ वी रिलाई ओनली ऑन दी बॉलिंजर बैंड्स, क्या हो जाता है कि बॉलिंजर बैंड के जब ऊपर जाके वापस नीचे आ जाती है प्राइस, इट टेंड्स टू कंसोलिडेट फॉर क्वाइट सम टाइम. वहां पर ही साइडवेज हो जाती है बिकॉज वो वहां पर रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रही है, बट इट इज स्टक ऑन दैट साइडवेज मोमेंटम. तो ऐसे साइडवेज मोमेंटम में हम ना फंसे, इसलिए हमने यहाँ पर मोमेंटम के लिए भी एक इंडिकेटर ऐड कर दिया है विच इज दी स्मूथ RSI इंस्टेड. एंड आप ये भी सवाल पूछोगे कि अब RSI का हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, व्हाई आर वी यूजिंग दी स्मूथ RSI. तो वी आर यूजिंग दी स्मूथ RSI इंस्टेड ऑफ दी RSI बिकॉज RSI जो है उसमें जो काफी फॉल्स सिग्नल्स बनने की प्रोबेबिलिटीज है. एंड इंस्टेड इफ यूज दी स्मूथ RSI, उसमें ये जो सिग्नल्स है, नंबर ऑफ सिग्नल्स विल रिड्यूस, सो वी विल गेट बेटर क्वालिटी सिग्नल्स इन दैट केस. तो यहाँ पर हमारा शॉर्ट ट्रेड का जो एंट्री होगा जब प्राइस अपर बैंड को ऊपर कट करके वापस नीचे आ जाए एंड उसी के साथ नेगेटिव क्रॉसओवर हो स्मूथ RSI में, तब हमारी एंट्री बनेगी. अब ये हमारी एंट्री बन गई. इसमें हम प्रॉफिट बुकिंग कब करेंगे. तो हमारे पहला टारगेट जो होगा मिडिल बैंड होगा. जैसे बिकॉज मीन रिवर्जन का जो कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है कि जब एवरेज से दूर जाता है प्राइस, इट विल रिटर्न बैक टू द एवरेज. आप नोटिस कर पाओगे. विल जस्ट गो बैक टू द सॉफ्टवेयर वंस अगेन. अब यहाँ पर इन दिस केस ओवर हियर फॉर एग्जांपल मैं चार्ट को जरा पीछे मूव कर देता हूँ. तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर इसने अपर बैंड को तो टच किया है, फिर ये जब वापस नीचे आया, यू कैन सी दैट इट हैज टेकन अ रिवर्सल राइट फ्रॉम द मिडिल बैंड हियर. लोअर बैंड को यहाँ पर टच नहीं किया है. तो इन दिस केस हमारा पहला जो टारगेट रहेगा बिल्कुल मिडिल बैंड पर ही रहेगा. एंड फिर उसके बाद अगर हमारा फर्दर जो सिग्नल है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला ट्रेड हम देख लेते हैं, और फॉर एग्जांपल ये आगे थोड़े रिसेंट वाला जो ट्रेड है उसको हम देख लेते हैं. तो हियर फॉर एग्जांपल हमारा नेगेटिव सिग्नल इस कैंडल पर बन गया. तो ये यू कैन सी दैट इट इज क्वाइट क्लोज टू द एवरेज ओवर हियर. तो ये यहाँ पर, बट ये हमारा जो RSI है, स्मूथ एंड RSI, यू कैन सी दैट इसमें अभी भी जो नेगेटिव क्रॉसओवर है दिस हैज बीन मेंटेन्ड हियर. तो इन दिस केस जब हमारा नेगेटिव क्रॉसओवर सस्टेन हो रहा है, तब हम यहाँ पर ये जो ट्रेड है हमारा वो ट्रेल करेंगे. वी विल कंटिन्यू टू स्टे इन दिस ट्रेड until this negative crossover is reversed. तो अगर इन दिस केस ये जो निफ्टी का एग्जांपल है यहाँ पर हम ट्रेड लेते, तो ये हमारा पहला टारगेट जो है यहीं पर आ जाता, ये हमारा ट्रेड यहीं पर खत्म हो जाता. एंड इफ यू वुड हैव नॉट अप्लाइड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेलिंग, इतना पूरा बड़ा मूव यहाँ पर हमारा मिस आउट हो सकता है. तो इन दिस केस इसलिए हम स्मूथ एंड RSI को भी साथ में यूज कर रहे हैं. तो जब हमारा एग्जिट होगा वी विल बी यूजिंग द पॉजिटिव क्रॉसओवर ओवर हियर. तो यही मैंने PPT में भी मेंशन किया है. Target 1 will be your middle band, target 2 will be your lower band here, and इसमें आप you can continue trailing until there is a positive crossover in the smoothened RSI. And now I can see that we have a few questions over here. ये is smooth RSI different from RSI? Yes, definitely. I will show you the difference within the software itself. ये यहाँ पर जो chart setup है, I have added the smoothened RSI here, and I will also similarly add the RSI indicator. So when we take a look at the RSI indicator, जब हम parameters देखने जाते हैं, we have the 14 period RSI and we have the average period. तो ये जो green and red line है,
उसके पैरामीटर्स है. सो आई विल जस्ट ऐड दिस हियर. तो ये हमारा RSI भी ऐड हो गया यहाँ पर, ये हमारा स्मूथ एंड RSI भी ऐड हो गया. तो एज यू कैन सी दोनों काफी सिमिलर है, बट सम फॉल्स क्रॉसओवर्स, लाइक यहाँ पर इन केस ऑफ RSI यहाँ पर एक फॉल्स क्रॉसओवर हुई है. तो ये स्मूथ एंड RSI जो है, इट प्रिवेंट्स दैट बाय टेकिंग एन एवरेज ओवर हियर. इसमें हम जब पैरामीटर देखने जाते हैं तो ये RSI पीरियड जो है 14 है, वन सेकेंड सेम पैरामीटर यूज हो रहा है, एंड एवरेज पीरियड भी हमारा बिल्कुल यहाँ पर 9 है. तो 14 एंड 9 तो सेम रहेगा यहाँ पर, बट ये जो इनपुट एवरेज पीरियड है, तो इसमें ये जो RSI पीरियड है, इसका हम एक अब एवरेज ले रहे हैं. वी आर टेकिंग एन EMA3 ऑफ द RSI 14 पीरियड RSI. तो ये जो है वी आर स्मूथनिंग आउट आर इनपुट ओवर हियर. तो इस तरीके से आपके फॉल्स सिग्नल जो है दे विल गेट टेकन आउट. तो जो भी हमारे स्मूथ इंडिकेटर्स अवेलेबल है, वो क्या करते हैं, जो इंडिकेटर की वैल्यू है उसको दे टेक इट एज एन इनपुट फॉर अ मूविंग एवरेज. तो इससे आई होप दिस वाज आई वाज एबल टू क्लियर आउट योर डाउट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द RSI एंड द स्मूथ RSI. बाकी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. Please show script based which tends to move one side like BSC MRF. Exactly. तो यहाँ पे trending जो scripts हैं, so we'll just take a look at BSC here, as you have mentioned it as an example here. तो इसमें भी आप देख सकते हो, as I take the chart over, you can see that after the reversal over here, यहाँ पे जो reversal आया उसके बाद it has continued to stick to this upper bound over here. जो अपर बैंड है उसी को वो यहाँ पर टच करते जा रहे हैं. वी आर नॉट सीइंग एनी चेंजेस ओवर हियर इन दिस. तो इसलिए यहाँ पर एंड इन केस यहाँ पर जो हमारा रिवर्सल बनेगा, इफ यू कैन दीज लेवल्स आल्सो एक्ट एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स. तो यहाँ पे भी यू कैन यूज दिस एज एन एंट्री हियर, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट ऑफ मेन रिवर्जन. ये थोड़ा बॉलिंजर बैंड के बेसिस पे यूजिंग इट एज अ रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन हो जाएगा. तो इसमें भी वी कैन यूज द मोमेंटम हियर. तो ये जब हमारा SRSI पॉजिटिव हो जाता है इस बार पे, तो यहाँ से अगर हम एंट्री लेंगे तो वी कैन कंटिन्यू ट्रेलिंग ओवर हियर. बट ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा मीन रिवर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज स्लाइटली डिफरेंट ओवर हियर. तो यहाँ पे ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी जो है वो भी हम देख सकते हैं. जब भी यहाँ पर रेंज बाउंड था, तो रेंज बाउंड में भी हम देख सकते हैं यहाँ पर इट हैज शोन अ कॉन्सेप्ट ऑफ मीन रिवर्जन हियर. इट हैज टेंडेड टू मूव टुवर्ड्स द एवरेज. Can I get the chart setting? Yes, Sachin sir. The files will be available. यहाँ पर ये जो फाइल मेन्यू है, वहां पर अगर आप डाउनलोड फाइल्स में जाओगे एंड ये मिसलेनियस पर क्लिक करोगे तो ये गेट फाइल्स. तो अभी करंटली अब तक ये फाइल अपलोड नहीं हुआ है, बट सून आफ्टर द वेबिनार एंड्स द फाइल विल बी अपलोडेड. यहाँ पर आप देख सकते हो 1904 वेबिनार. तो वैसे ही 2604 वेबिनार इस नाम का एक फाइल अवेलेबल होगा जिसमें ये जो चार्ट सेटअप है दिस विल बी अवेलेबल, एंड अलॉन्ग विद दिस द स्मूथ RSI विल ऑल्सो बी अवेलेबल. How to add the smooth RSI? The smooth RSI, so I will press S to open the study selection window, and over here जब मैं S press करता हूँ, so I can see this whole list of smooth indicators. तो यहाँ पर you can see this smooth relative strength index, so you can select this and add this. तो जो मैंने यहाँ पर SRSA add किया है वो आपके चार्ट पर भी आपको मिल जाएगा. Hope I was able to clear out your doubt. तो अब जो है आई विल रिमूव द RSI वंस अगेन. जो हमारा सेटअप है वी विल मूव बैक टू दैट. नेक्स्ट जो है हाउ इट वर्क्स फॉर इंट्राडे 15 मिनट टाइम फ्रेम. आई हैव नॉट टेस्टेड इट ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम, बट मैंने 10 मिनट टाइम फ्रेम पर जरा टेस्टिंग की है इसकी. एंड द क्वेरी फाइल दैट वी विल बी टेकिंग अ लुक एट, उसमें भी मैंने 10 मिनट्स के लिए आई हैव एडेड कंडीशंस फॉर दैट. सो वील जस्ट गो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन हियर, एंड अब जो है हमारी लॉन्ग एंट्री सिग्नल्स भी हम देख लेंगे कैसे फॉर्म होंगे. तो इट्स जस्ट द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द शॉर्ट एंट्री ट्रेड सिग्नल. तो यहाँ पे प्राइस जब लोअर बैंड के नीचे जाकर वापस ऊपर आ जाता है, एंड उसी के साथ RSI में इन द स्मूथ एंड RSI देयर इज अ पॉजिटिव क्रॉसओवर, दैट विल बी कंसिडर्ड एज आवर एंट्री सिग्नल. वंस अगेन द टारगेट, द फर्स्ट टारगेट लेवल जो हम यूज करेंगे वो होगा हमारा मिडिल बैंड, एंड देन फॉलोइंग दैट अगर जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो मेंटेन होगा तो फिर हम ट्रेल करते जाएंगे. सेकंड टारगेट होगा अपर बैंड. अपर बैंड पर भी आपको बुक नहीं करना, आपको लग रहा है पॉजिटिव मोमेंटम सस्टेन होता रहेगा, तो जब तक हमारा जो SRSI में जो क्रॉसओवर हुआ है until it is reversed we will not be taking an exit. आप वहां पर होल्ड करके रख सकते हो. तो बट बेस्ड ऑन दैट आपका जो ट्रेड का लेंथ होगा that can be extended, तो वो फिर एज ए लॉन्ग टर्म ट्रेड भी बन सकता है until there is a crossover of reversal of the crossover in the SRSI. तो अब यहाँ पर इसका हमने जो क्वेरी फाइल क्रिएट किया है, we'll take a look at it and I will also explain to you how you can build this particular query.
ये मैं टेक्निकल क्वेरी विंडो जो है इसे ओपन कर लूंगा एंड ये जो फाइल है बीबी मीन रिवर्जन, इस नाम से मैंने फाइल सेव करके रखी है. दिस फाइल विल बी प्रोवाइडेड टू यू, बट इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग हाउ टू बिल्ड दिस, ये मैंने क्वेरी कैसे बनाई है वो भी मैं जरा एक्सप्लेन कर दूंगा. तो यहाँ पर जो हमारा बॉलिंजर बैंड का कंडीशन है, इफ यू टेक अ लुक हियर इन दी बॉलिंजर बैंड, ऐसा यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन नहीं है कि क्लोज बिलो अपर बैंड या क्लोज अबव लोअर बैंड, ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है. तो इन दैट केस यहाँ पर मैंने क्या किया, आई हैव जस्ट एडेड द बॉलिंजर बैंड स्टडी हियर एंड देन यहाँ पर मैंने एक स्टडी ऐड की है जिसका नाम है एवरेज टू लाइन टू इनपुट. सो इफ अ सर्टेन कंडीशन इज नॉट अवेलेबल, आपको कोई चीज का क्रॉसओवर, इफ यू वांट टू क्रिएट एन अ क्रॉसओवर ऑफ टू एवरेजेस, या कोई इंडिकेटर में आपको क्रॉसओवर क्रिएट करना है बट वो कंडीशन डिफॉल्ट कंडीशन मेन्यू में अवेलेबल नहीं है, यू कैन यूज द एवरेज टू लाइन टू इनपुट स्टडी हियर एंड यहाँ पर जाकर मैंने कंडीशन सिलेक्ट किया है कट बिलो एवरेज इन लास्ट एन बार्स एंड ये नंबर ऑफ बार जो है मैंने 3 सिलेक्ट किया है. तो पिछले 3 कैंडल्स में अगर कट हुआ है, मेरा जो अपर बैंड है अपर बैंड से नीचे आया है, विल वेट फॉर इट फॉर 3 कैंडल्स, बिकॉज क्या होता है जब अपर बैंड को कट करता है देयर इज अ टेंडेंसी टू कंसोलिडेट अराउंड द अपर बैंड फॉर सम टाइम. तो वी हैव सेट द नंबर ऑफ कैंडल्स ओवर हियर एज 3. 3 से ज्यादा हो गया तो वहां पर मोमेंटम जो है इट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, थोड़ा वीक मोमेंटम है. सो वी विल अवॉइड दोज ट्रेड्स, वी विल ओनली टेक ट्रेड्स इसमें विद इन 3 कैंडल्स जो है हमारा क्रॉसओवर जो हमारा एंट्री है वो बन जाएगा प्रॉपरली. सो आई हैव एडेड दिस ओवर हियर कट बिलो एवरेज इन लास्ट 10 बार्स. वैसे ही सिमिलरली अब यहाँ पर मैंने कंडीशन ऐड कर दिया है, इसमें आई विल हैव टू मॉडिफाई द इनपुट ओवर हियर. तो ये मैंने चेंज इनपुट कर लिया एंड ये मैंने 2 चीजें सिलेक्ट किया. आई हैव सिलेक्टेड द क्लोजिंग प्राइस एंड आई हैव सिलेक्टेड द अपर बैंड ओवर हियर. ये बॉल यू जो दिखाई दे रहा है दिस इंडिकेट्स द अपर बैंड. तो आई हैव सिलेक्टेड द जो ऊपर वाला इनपुट है, दिस इज द थिंग दैट इज मेकिंग द क्रॉसओवर. तो जैसे यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है कंडीशन जो है मेरा कट बिलो एवरेज इन लास्ट एन बार्स 3, इसका मतलब ये है कि मेरी जो क्लोजिंग प्राइस है दिस हैज कट दी बॉलिंजर अपर बॉलिंजर बैंड इन द पास्ट 3 कैंडल्स. ऐसे मैंने इस तरीके से ये कंडीशन क्रिएट की है एंड जस्ट लाइक दैट आई हैव आल्सो क्रिएटेड अ कट अबव एवरेज इन लास्ट एन बार्स 3 कंडीशन एंड इसमें जो मैंने इनपुट लिया है सिलेक्टेड दी क्लोजिंग प्राइस एंड आई हैव सिलेक्टेड दी बॉल एल. आप यहाँ पर देख सकते हो दिस इंडिकेट्स द लोअर बैंड ऑफ द बॉलिंजर्स. तो इस तरीके से मैंने एवरेज टू लाइन टू इनपुट का इस्तेमाल किया है टू बिल्ड दिस क्वेरी. एंड अलोंग विद दैट आई हैव एडेड द कंडीशन ऑफ द एसआरएसआई ओवर हियर कटिंग एवरेज अपवर्ड एंड कटिंग एवरेज डाउनवर्ड. यानी इसमें जब पॉजिटिव क्रॉसओवर एंड नेगेटिव क्रॉसओवर आएगा तो आई विल बी एबल टू स्कैन फॉर देम. अब यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशंस किए हैं डेली शॉर्ट एंट्री, डेली लॉन्ग एंट्री, इंट्राडे लॉन्ग एंट्री एंड इंट्राडे शॉर्ट एंट्री. इंट्राडे पे जो हमारा स्कैनर बिल्ड किया है हमने, आई हैव बिल्ट इट फॉर द 10-minute टाइम फ्रेम हियर. तो ये जो है अभी करंटली आई हैव ओनली टेस्टेड इट अ बिट ऑन द 10-minute टाइम फ्रेम. यू कैन मॉडिफाई द टाइम फ्रेम अगर आपको चाहिए, जैसे चैट में मेंशन किया गया था you wanted to test it on the 15-minute time frame. So over here you can just select these particular conditions. ये सारे जो भी कंडीशन है हमारे इंट्राडे के, आई विल सिलेक्ट ऑल ऑफ देम एट वंस. ये सारे कंडीशंस हमने सिलेक्ट कर लिए. फिर यहाँ पर मैं मिसलेनियस में जाऊंगा. मिसलेनियस में जाकर आई विल सिलेक्ट द टाइम फ्रेम जिसमें मुझे स्विच करना है. जैसे अभी 15 मिनट्स मेंशन किया गया था, सो आई हैव सिलेक्टेड द पीरियड एज इंट्राडे 15. आई विल क्लिक ऑन चेंज पीरियड फॉर सिलेक्टेड कंडीशंस. अब ये मैंने चेंज कर दिया. So now you can see that my conditions over here, they have changed from intraday 10 minutes to intraday 15 minutes. Can we check the current situation of Nifty? So currently, I will just minimize the query tab and we'll take a look at the chart for Nifty. So Nifty over here, currently you can see that it has touched the upper band over here. Upper band को इसने touch कर दिया है and since then it has been consolidating a little. But अब तक जो है हमारा यहाँ पर negative crossover form नहीं हुआ है. The RSI has not crossed below its average over here. तो जब तक हमारा average cross नहीं होगा, we will not be taking an entry here because until this is confirmed, हमारा जो momentum है, momentum is not on our side yet. It has turned down over here. Definitely, momentum जो है has slowed down. It is turning down, but we have not achieved the crossover yet. So we will not be taking a trade until this is confirmed here. अब ये जो query है, इसे हम current candle पे run करते हैं. We'll select this. अभी ये zero offset हमने select किया है. पहले हम इसे daily पर run करके देख लेंगे. Daily पर दोनों short and long entry
अगर आपको शॉर्ट साइड पर सेल साइड पर भी ट्रेड लेना है तो आप यहाँ पर जो है फ्यूचर्स ग्रुप पर रन कर सकते हो और यू कैन रन इट ऑन दी F&O ग्रुप ऑफ स्टॉक्स ओवर हियर, विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। तो प्रॉपर जो सेल सिग्नल है उसका भी आप इस्तेमाल कर पाओगे ऑन दी डेली टाइम फ्रेम्स इफ यू वांट टू शॉर्ट समथिंग। तो ये क्वेरी मैं रन कर रहा हूँ 0 बार पर, बाकी जो कंडीशंस है उन्हें मैं डिसेबल कर देता हूँ, इंट्राडे लॉन्ग एंट्री एंड इंट्राडे शॉर्ट एंट्री। तो यहाँ पर वी कैन सी दैट अ लॉट ऑफ स्टॉक्स आर मेकिंग शॉर्ट एंट्रीज ओवर हियर, यहाँ पे करंट कैंडल पर। विल टेक अ फ्यू एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल अब एबी कैपिटल आ गया। अब ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं, यू विल हैव टू फर्दर अप्लाई सम एनालिसिस ऑफ प्राइस एक्शन हियर। ये जरा आपको देखना पड़ेगा। क्वेरी विंडो को मैं मॉडिफाई मिनिमाइज कर दो तो हियर आई कैन सी द स्टॉक इज इन एन अपवर्ड ट्रेंड ओवर हियर। वैसे जो स्टॉक्स अपवर्ड ट्रेंड में चल रहे हैं इन्हें वी विल ट्राई टू अवॉइड। वी विल ट्राई टू लुक फॉर स्टॉक्स दैट आर जस्ट मूविंग इन अ रेंज बाउंड सिनेरियो। तो बाकी भी विल टेक अ लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स हियर। आई विल जस्ट ड्रैग माय क्वेरी विंडो डाउन तो चार्ट जो है हम जरा आसानी से देख पाएंगे। अब इन ABFRL जो है यहाँ पर, दिस इज स्लाइटली रेंज बाउंड ओवर हियर, ये थोड़ा साइडवेज है स्टॉक इसमें भी, बट यहाँ पर अपवर्ड ट्रेंड है एंड यू कैन सी दैट इज ऑलरेडी टेस्टेड द लोअर मिडिल बैंड ओवर हियर। तो इसमें जो है हमारा एंट्री बनना थोड़ा लेट है। अब एंजल वन देख लेंगे। सो लॉट ऑफ स्टॉक्स करेंटली अभी ट्रेंडिंग चल रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे इफ यू वांट टू कैच द रिवर्सल यहाँ पर हम एंट्री बना सकते हैं। ये यहाँ पर लोअर बैंड को इसने टच कर दिया है, क्रॉस कर दिया है। तो इसमें अभी जो सेकंड टारगेट लेवल होगा, यू कैन वेट फॉर द लोअर बैंड ओवर हियर। तो लॉट ऑफ बैंकिंग स्टॉक्स ओवर हियर, उसमें काफी सिग्निफिकेंट फास्ट रैली आई थी और अब ये काफी तेजी से नीचे गिरने लग गए हैं। तो ऐसे ट्रेंडिंग स्टॉक जो हैं इसमें हम थोड़ा अवॉइड करेंगे। बाकी लेट अस टेक अ लुक एट अ फ्यू मोर एग्जांपल्स, अगर हम प्रॉपर ऐसे कोई रेंज बाउंड स्टॉक को आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्या। राइट, सो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दी स्टॉक्स ओवर, ये सब अभी करंटली ट्रेंड में चल रहे थे ओवर हियर। अगर ये येस बैंक देखे, येस बैंक इज अ लिटिल साइडवेज ओवर हियर, उसमें इतना सिग्निफिकेंट अपवर्ड मूव आया था बट ये अभी डाउनवर्ड मूव शुरू हो गया है। लॉट ऑफ दी स्टॉक्स हैव ऑलरेडी टच द मिडिल बैंड हियर ऑलरेडी, काफी सिग्निफिकेंट। जो फ्राइडे था, फ्राइडे वी हैड सीन अ प्रीटी बिग मूव इन बोथ द इंडाइसेस एज वेल एज इन द स्टॉक्स एज वेल, जो अंडरलाइन फॉर्म करते हैं उसके। तो यहाँ पर आज के जो करंट कैंडल के जो एग्जांपल्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नॉट वेरी सूटेबल हियर। विल ट्राई एंड टेक अ लुक एट प्रीवियस कैंडल्स पर जो एग्जांपल्स बने हैं। यहाँ पर मैं ऑफसेट जस्ट स्विच कर लूंगा। विल टेक अ लुक कल के दिन यहाँ पर हमें क्या आया था। सो हियर वी हैड सीन चोला फाइनेंस, इसमें भी यहाँ पर हमें काफी अच्छी तरीके से, ये भी यहाँ पर ओवरऑल जो है काफी ट्रेंडिंग स्टॉक है यहाँ पर। बट हियर वी कैन सी दैट ये सिग्निफिकेंट एक रेजिस्टेंस जोन है। तो जब ऐसे सिग्निफिकेंट हम रेजिस्टेंस जोन्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो इन दिस केस विल बी एबल टू ट्रेड इवन इन अ ट्रेंडिंग स्टॉक। यहाँ पर हम रिवर्सल्स जो हैं हम यहाँ पर कैच कर पाएंगे। तो चोला फाइनेंस ओवर हियर, दिस इज अ प्रॉपर थिंग। अब यहाँ पर ये इसने मिडिल बैंड को टच करके अब ये वापस रिवर्ट कर रहा है। अभी हम वापस एक बार जरा ऑफसेट स्विच करके देख लेते हैं, तो वो ऑफसेट पर हमें क्या है। नो रिजल्ट्स ऑन द सेकंड ऑफसेट, थर्ड ऑफसेट पर देख लेते हैं। तो अब यहाँ जैसे 3 दिन पहले हमें जाइडस लाइफ में एक ट्रेड सिग्नल मिला था, तो जाइडस लाइफ आप यहाँ पर देख सकते हो मोस्टली जो स्टॉक है जरा साइडवेज चल रहा था, देयर इज नॉट मच ऑफ अ ट्रेंड इन दिस। तो इस टाइप के स्टॉक्स में हम यहाँ पर ट्रेड ले पाएंगे। तो यहाँ पर जाइडस लाइफ में इफ वी टेक अ लुक 3 days अगो, ऑफसेट जो है हमारा 3 है। सो इस कैंडल पर हमारा ट्रेड बना था एट अराउंड 845 के रेट पे इसकी क्लोजिंग हुई थी। तो यहाँ पर इसने जो हाई बनाया है, वी कैन कंटिन्यू ट्रेलिंग। ये यहाँ पर मिडिल बैंड, बिल्कुल अगले ही दिन यहाँ पर इसने मिडिल बैंड को टच कर लिया था, तो वी गॉट डिसेंट मूव हियर। एंड इन दिस केस यहाँ पर ये अगले दिन भी हम ट्रेल कर सकते थे इसे, बट ये अब वापस मिडिल बैंड के नीचे आ रहा है, तो ये यहाँ पर हम इसे एग्जिट कर देंगे। तो ऐसे आप यहाँ पर ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। जस्ट वन थिंग टू कीप इन माइंड, ये ज्यादा ट्रेंडिंग वाला स्टॉक नहीं होना चाहिए, एंड इवन इफ इट इज अ ट्रेंडिंग स्टॉक, you will have to try to identify if it is near a key resistance zone
or a key support zone using some price action analysis. अब ये हमने डेली पे कुछ रिजल्ट्स देख लिए हैं. लेट अस टेक अ लुक एट द इंट्राडे कंडीशंस एज वेल. ये यहाँ पर इंट्राडे कंडीशंस जो है उसे मैंने एनेबल कर दिया है एंड वी जस्ट सेट एन ऑफसेट ऑफ 5. अब यहाँ पर we'll just keep switching the offset until we get a few results here. Intraday में you can select a bigger group of stocks. ये मैं Nifty 500 ले लेता हूँ. So you'll be able to find results a bit more easily. Daily के लिए, however, you will have to run the scan on the F&O group because उसी में हम properly जो है short की opportunity ले सकते हैं. So यहाँ पर हम इसे 0 पर run कर रहे हैं and I'll open the 15-minute chart here just to show you what it looks like. तो यहाँ पर भी जो है फॉर एग्जाम्पल किर्लोस्कर ब्रदर्स ये स्टॉक जो है, अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है यहाँ पर साइडवेज ही है, रेंज बाउंड ही चल रहा है ये स्टॉक. एंड तो फिर इसमें यहाँ पर हम फर्दर इंट्राडे में भी वी कैन टेक एक्शन. तो यहाँ पर जैसे ये इसने लोअर बैंड को कट किया था, लोअर बैंड को कट करके फिर ये ऊपर आ गया, वी कैन सी दैट इट हैज टेंडेड टुवर्ड्स द मीन इन दिस केस एंड ये वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया. अब इसमें जो है वापस ये रिवर्सल आ गया, वापस ये साइडवेज चल रहा है स्टॉक. तो ये वापस यहाँ पर ये रिवर्सल सिग्नल बना है, बट हमारा जो एंट्री है वो बिल्कुल यहाँ पर बना है. दिस इज जस्ट बिकॉज ये डे एंड पे है, तो ये फर्दर हमारा ट्रेड यहाँ पर चलेगा नहीं. इसी के साथ हम LTF देख लेंगे. LTF में भी यहाँ पर हम देख सकते हैं काफी सिग्निफिकेंट फॉल आया, फिर ऊपर की तरफ गया, इट मेट सम रेजिस्टेंस ओवर हियर एट द अपर बाउंड ओवर हियर एंड अपर बाउंड से वापस नीचे की तरफ आ गया. So in this way, you will be able to identify signals on the intraday time frame as well. So that is all. We will be concluding the session now. Thank you so much everyone for joining the session. It was a very interactive session and it was very enjoyable for me as well. Thank you everyone for participating so much in this. And thank you for your valuable feedback. I can see majority of you have liked this session as well. So we will continue to provide such sessions in the future. Thank you so much everyone for attending.